The sun is also very intense there, the sunlight. Generally आपको होते भी नहीं है. One of the main reason for मतलब in general जो मुझे कमजोरी कमजोरी लग रहा है, उसके एक रीजन जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. जी. Hello, hi Harsha, how are you? Hello, sir. I'm fine. How about you? I'm also good. थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिए, है ना? Then you will start in 3 more minutes. Today we did till carbonyls, I guess. है ना? जी. By the way, Amna, you need to send me answers today, so please note down my number. Okay, and just need to add +91 here. Sir, can I send you my answers once my dad is back home, like from the office? Because No, I'm see, using my iPad. So I understand that, but see, that will be of not very much use now, because try to like you try to create an environment where it is like offline classes only. Now, in offline classes, it is, I mean, once in a while, it's fine that some students they come with their notebook after the class and then show the answers like survive. Then, if you need some further explanation, only then you would do that. Otherwise, I need to see how you are doing each and every question. And if you are doing something like which can be improved, then I can suggest you then and there only. No? Okay? Makes sense, Amna? yes. So from the For next if class onwards, I will ठीक है, actually add your number in my phone. I don't have ठीक my है, then phone right now. ठीक है. आज मतलब जब भी स्टार्ट किया ना, then in the class only I need that, okay? Because Okay, वापस sir. बाद में तो कुछ उसका कुछ नहीं बनेगा. Why is Okay. So Trishita from not the next joining? class. हाँ, next person. By the way, are you watching the recordings of Hello Weekend Halloween? Yeah, we are not watching those. Good evening, sir. Good evening, Who Rishita. said me? Yeah, I'm you. Sir, no, sir. Actually, I had my PTs going on in the school. Okay, so what chemistry is done? Yes, chemistry is done. How was it? Solutions chapter was hard. Solution. Oh, okay. The solution. Yeah, solution and Halloween came, I guess, right? Yes, yes. चलो, ठीक है. Uh, we are looking at carbonyl compounds. No? So I think we can start. We have seen one method of preparation of alcohol using carbonyl, that is by using a reducing agent. When we use a reducing agent, then we convert aldehydes to primary alcohol, ketones to secondary alcohol, right? And the number of carbon atom is still the same. Next, the B part is with the carbonyls only. We will react this with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. एक जनरल मैकेनिज्म हम आप लोग को पहले दिखा रहे हैं, like how the complete reaction happens, and then you can copy it down. अभी मत copy कीजिएगा, ठीक है? I will explain everything and then you are going to copy. So I will write a carbonyl compound like this. We'll have carbon, and there are 2 bonds in this carbon atom.
with a double bond O. And you will use RMGX, that is the general form for Grignard reagent. R can be anything. RMGX, not R cannot be anything, but rather R will be any alkyl group. ठीक है ना? R will be any alkyl group. अब ध्यान से देखिए जरा. Now the main reaction is going to start. First of all, in the Grignard reagent, magnesium, it is a metal. Metal has tendency to lose electron. That is why R, this carbon atom will be having delta negative charge. When carbon atom it is bonded to oxygen, then it is going to have a delta positive charge. So we have a negative and we have a positive part. So what will happen? Negative to positive electron movement will take place. Something like this. Always from higher electron density to lower electron density. Yeah, these arrows, they have physical significance also. They actually show how the electrons are moving. So आप ऐसा नहीं कि R और कार्बन का बॉन्ड बनाना तो आप मतलब उल्टा किस्म का बॉन्ड बना दीजिए. ठीक है, चलिए पुरानी चीजें 11 की. Now what is going to happen? Please see. As soon as this R is going to make this R, this will be a carbon atom. This carbon atom is going to make a bond with this carbon atom. This carbon cannot have 5 bonds. That is why it will break the weakest bond. The weakest bond will be, these are sigma. So pi सबसे weak होता है ना. ठीक है. Sigma is stronger, pi is weaker. So pi bond will be broken and you will get something like this. You'll have a carbon atom like this. This bond is as it is. The group which is above, that is also as it is. A new group will be introduced, that is R. So this R is new here. है ना? ये R कहाँ से आ रहा है? From the Grignard reagent. And we have here oxygen. This oxygen will get a negative charge. Magnesium will get a positive charge. So it will basically be OMgX. And why oxygen is getting negative charge? Because pi bond is breaking and it is getting electron density from there. Mg is getting a positive charge because when the carbon atom is attacking on the carbonyl carbon, then the carbon atom is coming with its electron density because ये electron rich है. ठीक है? So when this particular bond will break, more electronegative atom is a carbon, तो carbon के पास electron जाएगा. तो OMgX will be formed. Then we will just add water. Now, in organic chemistry, generally water को ना आप ऐसे लिखते हैं HOH, है ना? Positive, negative. So this oxygen with its lone pair electron, it will interact with this hydrogen atom. This magnesium will get the OH, and see what you are getting. You'll have carbon atom. Whatever groups were attached on the carbonyl carbon, they will be attached as it is. The oxygen of carbonyl carbon will be converted to OH, and here you are going to get R. ठीक है? Plus MgOHX. Now this is a byproduct. उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं. This hydroxide ion के केस में. Now what you need to remember is whenever you have a carbonyl compound, carbon, double bond O, some groups are attached here and here. When you react this with, first of all, RMgX, the second step, when you add water, what do you get? The carbon and oxygen pi bond breaks. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया. अब क्या क्या आ रहा है? ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ रहा है and this carbon atom is getting R group. What is this R? This R you will get from the Grignard reagent. So what is happening? CO, pi is breaking. Carbon and alkyl group from the Grignard reagent, and oxygen and hydrogen from the in the carbonyl carbon oxygen. These are forming. So overall, ये आपको याद रख लेना है. ठीक है ना? ऊपर वाला तो मैकेनिज्म है वो समझने के लिए. Now this should be memorized. This should be committed to your memory. है ना? बिल्कुल कंठस्थ. चलिए, please start with that. All of you understood now what is happening? Yes or no? Please tell me. Amina, Rishita, and Harsha. Can you explain the last part again? The general one. And the water one. Yes, sir. So in water, what happens? See, basically, आपके पास तो ऐसा होगा ना. Oxygen atom will be delta negative, or rather it will be having purely negative charge because ये आयनिक यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव था और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव था. इस वजह से ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया. सो व्हेन यू विल हैव वाटर, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव होता है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. तो ये नेगेटिव है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी. और जैसे ये अब ये ऑक्सीजन एटम है, इट विल गो टू दिस वन. मेक सेंस? Yes, sir. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Please copy this down. Now while you are copying, try to not look at screen. आप start कीजिए ऐसे कार्बोनिल कार्बन, उसमें देखना रिएजेंट है ना. देन उसके बाद वाटर. कैसे कैसे होगा रिएक्शन खुद से करने की कोशिश कीजिए.
I'm not waiting for you. Done, sir. Done. Now, next we are going to look at different types of aldehyde and ketones, है ना? Basically, different types of aldehyde तो नहीं, aldehyde में ही हम दो, we are going to look at two different categories. One is formaldehyde, because in formaldehyde both the groups attached to carbon atoms are hydrogen. लिखिएगा मत, ध्यान से समझिए पहले, ठीक है? Another case will be this, देखिए ऐसे समझ लीजिए, carbon atom, both of them are having, both the groups are hydrogen. Another case could be carbonyl carbon, and one group says alkyl group R and the other group is hydrogen. Another case could be carbon, both the groups are alkyl R and R dash and double bond. Okay, so these are the three different categories in which we have to see, right? Now, अब यहाँ पे जो reaction हो रही है, see this part is not going to change, this part is not going to change. Whatever changes are going to happen is going to happen on where, on these groups, है ना, which we have not shown. अब what are the different possibilities? Possibility ये है कि both of them are hydrogen. Possibility ये है कि one is carbon, one is hydrogen. Possibility ये है कि both are carbon atoms, है ना, both are alkyl groups. सबसे पहले हम वही देखेंगे, number one. Number one we are going to see RMGX. सिर्फ देखिएगा, भी लिखना नहीं है कुछ, प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है? अब ये क्या देगा, इसको हम लोग once we do the reaction we will write here, है ना? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. So I hope you can write directly यहां से. क्या होगा देखिए जरा, कार्बन, हाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड प्लस आर एम जी एक्स, ठीक है? अच्छा ऐसे करते हैं, एक सेकंड, लेट मी राइट इट लाइक दिस, है ना? 1 2 कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. वन स्टेप में आर एम जी एक्स, सेकेंड स्टेप में पानी. So what will happen? This hydrogen is as it is, this carbon is as it is, this hydrogen is as it is, है ना? उनको तो कुछ नहीं होने वाला. Now this pi bond will break, single bond OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास R. I can write this like this ना, R CH2 OH. Tell me, this is 1 degree, 2 degree, 3 degree, primary, secondary, or tertiary. What type of alcohol is this? What type of alcohol is this? Primary, secondary, or tertiary? Primary. Primary. Very good. ये क्या मिलता है आपको इससे? 1 degree alcohol. ठीक है, तो RMGX प्लस फॉर्मल्डिहाइड करेंगे, then you are going to get what? You are going to get a primary alcohol. Primary alcohol. ठीक है, अभी देखते रहिए ना ध्यान से. Second, if you have RMGX plus any other aldehyde, है ना, other than formaldehyde. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे other aldehyde. I hope you will understand while you are reading the notes. What does this other aldehyde means? Other than formaldehyde. तुक्का मारिए तो जरा क्या मिलेगा? Any guess what we will get? Any guesses? Secondary. Yes, very good. Just give me a second. Hello?
अरे would have told ना. आपने बोला क्यों नहीं? Guys, you understood? Yeah. Amna, you need to Yes, sir. speak. In these times, Amna, you need to speak. Okay, Amna? If I am on mute ना ऐसे तो फिर आप बोलिएगा. Guys, you understood this part? MGX plus ketone, yes or no? Amna, Rishta and Harsha? Yes. Yes, sir. अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है. जब भी देखिए, if it is urgent, speak Amna, okay? Don't message. Okay, Amna? Yes, Amna, understood? What you need to do? Yes, sir. I don't know. My mic was हाँ. not getting on. अच्छा. चलिए कॉपी कीजिए. Then we will do a lot of questions, है ना? 4-5 सवाल तो इसके ये करेंगे. Then we will also look at similar question of how we did in the previous class for alkenes. ना retrosynthesis करेंगे हम लोग. We will do retrosynthesis. I think we will be completing carbonyls today. ठीक है. Let me know once you're done. Amna done? Yes, sir. लिखिएगा. Write the products for following. ठीक है. By one. HCHO. What is this 1 2 3 कौन से कैटेगरी में आएगा? थोड़ा माइक ऑन रखेंगे आपको प्लीज. HCHO, tell me which category 1 2 3. नहीं समझ में आ रहा है. अभी 1 2 3 तीन कैटेगरीज पढ़ा ना हम लोगों ने. फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड. हाँ 1 2 3. आमना, कीप योर माइक ऑन. Yes, sir. जी. हाँ, ये बताइए, दिस इज विच कैटेगरी 1 2 3. 1. 1 है. 1 है आमना. 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको कार्बन कार्बन पे. Wait, sir. वेट सर, बताइए, नहीं समझ में आया अभी तक? No, sir. नहीं समझ आया. नहीं समझ में आया. Tell me what are the three categories that I'm talking about? The three categories. Formaldehydes, other aldehydes, and No. Wait. थोड़ा आराम से. What is formaldehyde? When the carbonyl carbon has what groups attached? hydrogen. Only hydrogens ना? Yes, only hydrogen. So ये second क्या है आपके पास? दोनों. Can you identify which is the carbonyl carbon 1 2? बताइए. Which is carbonyl carbon?
जी बताइए, विच इज कार्बोनिल कार्बन, 1 और 2? 2. 2 is carbonyl carbon. What are the groups attached on the carbonyl carbon? What are the groups attached on carbonyl carbon? एक तो CO हो गया ना, हम ना CO इज कार्बोनिल, यस और नो? Yes, yes. तो कार्बन पे एक क्या अटैच है बताइए ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? CO के अलावा क्या किया है सेकंड कार्बन पे? अदर देन CO व्हाट डू यू सी? H. एंड एंड नथिंग एल्स? नहीं, ये तो फिर आपका बेसिक्स आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आई होप यू नो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सामना? Yes, sir. तो फिर बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे? ये सर बोल रहे हैं सिर्फ आप। जी बताइए, अदर देन हाइड्रोजन व्हाट इज अटैच्ड ऑन दिस कार्बन एटम? अदर देन हाइड्रोजन व्हाट इज अटैच्ड? कुछ नहीं अटैच्ड है। Oxygen. ऑक्सीजन छोड़ दी ना, कार्बन, ये तो कार्बन हो गया ना, दैट इज तो कार्बोनिल, वो छोड़ दीजिए आप। व्हाट आर दी अदर टू ग्रुप्स? एक हाइड्रोजन है, दूसरा Methyl group. मिथाइल ग्रुप। सो इट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है? बोथ द ग्रुप्स Hydrogen. आर हाइड्रोजन। इन दिस व्हाट डू वी हैव? व्हिच कैटेगरी है बताइए, कौन Other सी कैटेगरी है? aldehyde. हाँ, 1 2 3 बताएंगे ना, थर्ड में बताइए, Yes. थर्ड इज विच कैटेगरी? तीसरा क्वेश्चन कौन सी Third, कैटेगरी का है? क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड है, या फिर कीटोन है? ketone है. कीटोन है, तो वो विच कैटेगरी? 1 2 3? 3. 3। फोर्थ वाला बताइए, 1 2 3। 3. फिफ्थ वाला बताइए, 1 2 3। 3. व्हाट इज दिस? ये कीटोन है? ऐसे नहीं चलेगा ना अपना काम। ध्यान ध्यान, इज दिस अ कीटोन? इज दिस अ कीटोन? No, 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 बोलो। no, sir. फिर कौन सा कैटेगरी? Secondary. सेकेंडरी। हाँ, सेकंड कैटेगरी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी आप लोगों को करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, क्लियर गई? देयर आर टू ऑप्शंस फॉर यू गाइस। आइदर यू मेक द होल कंपाउंड, जो कि बहुत लंबा, दैट आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइस कि आप सारा का सारा सवाल ऐसे ही करें, डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद यहाँ पे CH3 ऐड करके, नहीं, ठीक है? यू नीड टू बी अ बिट क्विक. So in order to be a bit quick, you have to identify what type of alcohol you are going to make. ठीक है? So this is the first category. So we will be making what type of alcohol? Primary, secondary, or tertiary? I need answers. In the first question, I would be making primary alcohol, secondary alcohol, or tertiary alcohol. बताइए, अरे Primary. जल्दी बोलो। प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल विल बी हैविंग CH2OH, ये तो आप लोग को पता है ना। प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH होगा, क्या ख्याल है? बोलो भाई। Yes. नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। CH2OH, आमना बताएं, आमना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में नहीं आ रहा है, sir. आम नहीं आ रहा समझ, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल? आमना, Yes. आमना प्राइमरी अल्कोहल कराया तो था ना, नोट्स में है आपके, यस और नो? प्राइमरी, सेकेंडरी, Yes, टर्शरी। yes. देखिए प्राइमरी, फ्लिप, तुरंत फ्लिप कीजिए पेज, देखिए कैसा होता है प्राइमरी। ला ला, इसीलिए पढ़ाए थे हम वो। देखिए कैसा होता है प्राइमरी, बताइए। ऐसे होगा ना, एक बॉन्ड दिया होगा, फिर CH2 लिखा होगा, फिर OH लिखा होगा, क्या ख्याल है? जी. ऐसे ही है प्राइमरी। हाँ बस, ठीक है। So if you are getting primary alcohol, then you will make this fragment, yes or no? कर सकते हैं इतना, आमना, रिशितान, हर्षा? Yes. बोलो, ठीक है। Yes, sir. नाउ यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द अल्काइल ग्रुप ऑन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या अल्काइल ग्रुप है? CH3. बस वही लगा देना, CH3। दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब ध्यान से देखिए जरा, जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया होगा उनके लिए तो बहुत नुकसान की बात हो गया। देखिए, अब 1 नहीं, हम ऑल कैटेगरी डाल रहे हैं, 1A, ठीक है? HCHO। आई विल बी चेंजिंग द मिथाइल ग्रुप। पहले मिथाइल था, देन यू हैव 2 कार्बन एटम्स, MgCl,
सेकंड में वाटर, 1B HCHO। तो यहाँ पे आपके पास है बेंजीन, छोड़ दीजिए अभी, बेंजीन का दूसरा केस ले लेंगे एक बार हम। यहाँ पे आपके पास है समथिंग लाइक दिस, देखिए यहाँ पे आपके पास MgBr H2O, ठीक है। दोनों सवाल को देखिए ध्यान से, CH2H तो होगा दोनों में, CH2H तो होगा ना, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू अटैच दिस कार्बन एटम विद द मिथाइल, मतलब विद द अल्काइल ग्रुप, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द अल्काइल ग्रुप ना विच इज अटैच्ड विद प्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिख रहा है आप लोगों को ये सोनोप्लीशियल नहीं, ब्लू कार्बन एटम रिशितन हर्षा आमना Yes, sir. omni, ठीक है। तो दिस ब्लू विल बी अटैच्ड टू दिस कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। जो आपके पास द कार्बन विच इज अटैच्ड विद मैग्नीशियम इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन। सो इफ यू लुक एट दिस कार्बन एटम इट विल बी हैविंग CH2, ठीक है। तो आपको क्या अटैच होगा यहाँ पे CH2, दिस इज फर्दर अटैच्ड विद CH3, इस तरह से ध्यान से देखिएगा एक बार और। हियर वी आर गोइंग अगेन हैव व्हाट CH2H, यहाँ आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। CH2H, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल दैट यू आर गोइंग टू मेक। दिस कार्बन एटम इज हैविंग हाउ मेनी हाइड्रोजन, जरा बोलिएगा। दिस इज द ना, this is the carbon which is reactive. Why? Because this is the carbon that is attached to Grignard region. Amna, are you with me? Yes, sir. ठीक है। So now tell me how many hydrogens on this carbon atom? This blue carbon. How many hydrogens? now हमने बताया था हमें हाइड्रोजन काउंट करने के लिए क्या करना होता है? One How hydrogen. many bonds? Very good, one hydrogen, बहुत सही। तो ये क्या हो जाएगा CH। Now this carbon atom, ये जो ब्लू वाला कार्बन हमने बनाया था, this is further attached with CH3 and one more CH3, क्या ख्याल है? So this carbon will also be attached, ये ऐसी फ्रेगमेंट आ जाएगा ना, ऐसी CH3 and CH3। थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Tell me guys। नहीं आ रहा है, Yes, किसी को नहीं आ रहा है क्या yes. समझ? कॉपी कीजिए। So the I'm not- third one, हम्म, I don't know how to draw the bond line structures properly. you don't know how to draw the bond line section? थर्ड वन किसमें, 1 2 3 या 1A 1B, कौन सा? No, sir, the थर्ड question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा नहीं वो हम सब कराएंगे ना, आराम से आइए पहले 1A 1B कीजिए। डन, 1B तक हो गया, आमना रचिता हर्षा। Yes, sir. यस, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी 2A 2B आएगा, है ना। देखिए ध्यान से देखिए। सो व्हाट, आप बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल आर वी गोइंग टू गेट? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल? Second. सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप फॉर्मेट देखेंगे ना, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, CHOH, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, देखिए अगर आप देखिएगा ना तो यहाँ पे सारी चीजें हैं आपके पास, CH3 CH और बस इसको OH कर देना है आपको। सो एज इट इज लिखिएगा, CH3 है तो CH3 का आपने, उसके बाद CH एंड दिस विल बी OH। इतना समझ में आ रहा है? ये सोनो प्लीज टेल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, मेक सेंस? बोलो भाई। Yes, sir. व्हिच वाज द कार्बोनिल कार्बन, 1 और 2? व्हिच वाज द कार्बोनिल कार्बन? जोर से बोलिएगा, जोर से जोर से। आमना आपकी तो आंसर ही नहीं आती, 1 और 2, व्हिच वाज कार्बोनिल कार्बन आमना? Two. हाँ, तो 2 में ही आपको क्या अटैच करना है, आर ग्रुप। व्हाट इज द आर ग्रुप? CH3 CH2,
कहाँ से अटैच होगा, CH2 से अटैच होगा, CH3 से अटैच नहीं होगा, CH2 CH3 ऐसे ही बनाना है। ठीक है, 2A में देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, CHO single bond 1 2 3 and then here we are having MGBR. Assalamu alaikum Zaina, am I audible? Yes, sir. Why are you so late, Zaina? So I was trying to join, but then I couldn't join through the app, and I couldn't open WhatsApp, App? so I couldn't join through the Zoom link either. You could not open हो, ठीक है चलो, बहुत ज्यादा लेट है आप, आपको अपनी समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है, so you need to wait for at least like 5-10 minutes, okay? Yes, sir. You were not present yesterday also, why? So I had my physics test today, So, so I wasn't able to attend. sorry, what? I had my physics test today, so I wasn't able to attend. I took a class with Amna ma'am for physics. Actually, yesterday you had class at this time. Yes, sir. I had a one-on-one session with her. So यहाँ पे आपके पास क्या होगा ना, you will have 1 2 3, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स के बाद OH, तो 4 कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम्स वो बना दिया आपने, एंड देन यू विल ऐड अ OH ग्रुप हियर, ठीक है, तो ये करना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल. Then this carbon atom, identify the carbon which was carbonyl carbon. In this carbon, what you will attach? Whatever group is attached on this particular Grignard reagent. This CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. You can do the open structure also. That will be also fine. एक और example देख लीजिए. 2B. I'm going to give you same thing. CHO, 4 carbon atoms. First में आपके पास Grignard reagent, which is something like this, MgCl. Second, we are going to have water. Okay. So here 1 2 3 4 as it is. Then OH. Identify the carbonyl carbon. This was the carbonyl carbon. Then you will attach what, the group that is on Grignard reagent. I hope you can understand what is the carbon which will be attached. This carbon यहाँ से point of attachment होगा. So you'll be having something like this. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. रिश्ता, हर्षा, आमना, 2B तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, कॉपी कीजिए. इतना हार्ड नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है ना, हम तो काफी आगे तक के एग्जांपल्स आपको बता दे रहे हैं, ये आएगा सेकंड जो एग्जांपल है ना वहीं तक आएगा, बहुत ज्यादा CH3 से ऊपर तो उठता नहीं है, लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन में. लेट मी जस्ट सी, बट आई डोंट रिमेंबर एनी क्वेश्चन दैट इज अबव CH3, ठीक है, बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस ना, वो पूछ तो सकते ही, पूछा नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल, लाइक इट इज लाइक प्योर लॉजिक के हिसाब से समझिएगा चीजों को, तोड़नी है चीजें और जोड़नी है चीजें ना, यू नीड टू ब्रेक थिंग्स एंड यू नीड टू फॉर्म सम बॉन्ड्स, दैट्स इट. मैकेनिस्टिक अप्रोच तो कुछ खास बोर्ड लेवल में आप लोग को आता नहीं है, ठीक है, कि लाइक कंप्लीट मैकेनिज्म नॉट आस्क्ड एवर. जी चलिए देखते हैं इसमें कुछ सवाल. डन टिल 2B तक हो गया. Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेम थिंग यहां भी होगा. व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कीटोन एज इट इज, डबल बॉन्ड की जगह OH कर दीजिए, ठीक है, सो विल डू एवरीथिंग एज इट इज, rather than double bond you will put the OH, ठीक है. नाउ मेक द Grignard reagent as it is, बस MgBr को हटा के दिस, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दिस वन, दिस कार्बन एटम विल बी अटैच्ड टू कार्बोनिल कार्बन. क्या करना पड़ेगा, ऐसे किया आपने, मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी. ऐसे ही होगा ना, देखिए हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ऐसे बोलिएगा सर कहां से कहां पहुंच गया, ऐसे होगा ना रिएक्शन, दिस कार्बन एटम विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, देन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, देन उसके बाद वाटर का एडिशन, तो उसे तो OH मिल जाएगा, बट यू कैन सी दैट दिस कार्बन एटम, माय बैड,
this carbon atom which was bonded to Mg, it is the one which is going to attack. Similarly यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें सब कुछ ऐसे बना दिए, rather than double bond you will put OH. ठीक है, और here you can see that this carbon atom will be attached like this, इस तरह से attachment होगा. Similarly for the fifth one, now this fifth one is a case of second वाला है ना, second type, जिसमें यार इसको खुद से बना के देखिए जरा क्या बनेगा. CHOH and then this carbon will be attached from the carbonyl carbon. Fifth वाले का आंसर आपको दीजिएगा please. Send the answer for the fifth one. So fifth one will be secondary. हाँ secondary होगा ना, aldehyde है. Send the answer for the fifth one. Zaina, in your class, haloalkane halorine is going on now. Yes, Zaina. भाई अभी हमें ध्यान नहीं देने का तो भाग गई क्या? Zaina, am I audible? हाँ, Yes, आपकी आवाज नहीं आ रही. You are here. yes, sir. Am I audible? Yeah, नाश्ता कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर. अच्छा ठीक है, क्लास में है ना? जी सर. ठीक है. What's going on in your school? D and F block elements. B and F block element is going on. समझ में आ रहा? D and F block. आपने टीचर से पूछा, सर why did you start, और मैम why did you start D and F block? No sir. Why? पूछना चाहिए ना आपको. Hmm. ये रिशिता, देखिए सही है क्या रिशिता? Is it correct? No, sir, it doesn't make sense, but that's all I could. No. स्टार्टिंग तो आप सही कर सकते थे ना भाई, 6 कार्बन का आपका 5 कार्बन बन जाता है. You know this ना, that this is having 6 carbon atom and this is having 5 carbon atoms. ये तो कम से कम दिख रहा होगा आपको. Other than that, it is correct. You know what? यहाँ जो आपने किया है ना, that is all fine. Okay. तो ये मिस्टेक नहीं एक्सपेक्टेड है यार, रिशिता नहीं एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड है. ठीक है, आप सोचो तो कितना आप एग्जाम में ये करके आ जाओ कि द रिएक्शन पार्ट वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज करेक्ट, बट आप जो जहां रिएक्शन नहीं हो रहा वहां गड़बड़ कर रहे हैं आप. बाकी जो आपने किया ना, दैट इज परफेक्टली फाइन. यहाँ पे आपने CH रखा है, ठीक है, उसमें आपने मतलब भले ही जैसे भी जोड़ा हो, यहाँ पे आपने OH जोड़ दिया, ठीक है, एंड देन हियर यू हैव एडेड 2 कार्बन एटम्स. बिल्कुल सही है ये, ऐसे कर फाइन, कंप्लीटली फाइन, मेक्स परफेक्ट सेंस. ठीक है, भले ही इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, दैट्स अदर थिंग, बट देखिए कैसे होगा ना, मतलब हमको तो बहुत अच्छे से लिखने आता है, क्या करें.
So you can either do it like this कि OH वहां पे आ जाएगा ऐसे and then you'll have to attach two carbon atoms, तो ये ऐसे, ठीक है। लेकिन आपने जो लिखा है वो भी सही है ना, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस इज CH one carbon with one hydrogen, CH2 CH, यही लिखा है आपने SN ऑफिशियल में, दैट सेगमेंट। Yes, sir. आप देखिए कहाँ गलती, कितना अफसोस होगा आपको जब आप ये बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे, है ना ऋषिता? Yes. ये कितना अच्छा बनाया हमने हर्षा, आप देखिए कितना खराब बनाया हर्षा, ट्राइड एटलीस्ट 3 टाइम्स लेकिन सही नहीं बना हमसे। देखिए कितना प्यारा बनाया हमने हर्षा, सही बनाया ना, लेकिन हमने से गलत बना दिया और फिर आप नहीं नहीं, सही तो बनाया हमने, ठीक है। चलिए, थोड़ी उलझन तो होती है जब यू कैन नॉट मेक द प्रॉपर स्ट्रक्चर, बट वो टाइम के साथ ही आएगा ना, ऐसे तो एक बार में नहीं आ जाएगा, ठीक है। Sir, but it's Moving, correct. it's correct, it's correct, it's correct. No, but you have made some effort to make it look a bit good ना, थोड़ा सा आपने अच्छा कोशिश किया है। For example, CHOH, CH2, CH3, that was fine. Then you made something, आपको मजा नहीं आया उसमें, फिर आपने दूसरा बनाया, है ना? That is why I was just joking with you. चलिए, I hope enough examples are done. आप इन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा ना, आपके लिए काफी से ज्यादा हो जाएगा ना, इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम लोग थोड़े दूसरे टाइप के सवालों में आते हैं, ठीक है, थोड़े दूसरे टाइप के सवाल में आते हैं। एक तो सवाल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू कन्वर्ट, बाय द वे ऋषिता, डिड यू वॉच दैट कन्वर्जन लेक्चर फॉर हैलोएल्केन हैलोरीन्स? Yes, sir. पूरा देख लिया आपने? हाँ सर, वो स्पीड बढ़ा दिया सर। स्पीड बढ़ा दिया, कॉपी नहीं किया कुछ, स्पीड बढ़ा दिया, वाह। डिड यू नहीं, कॉपी थिंग्स डाउन, समझ में आया? I paused and then I copied it down. समझ में आई चीजें या समझ में नहीं आई? आई होप दैट वाज लॉजिकल, जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का, क्या ख्याल है? हाँ, टेल मी ऋषिता। सर 50-50। 50-50 तो फिर हमको आप भेजते ना, इसमें समझ में नहीं आया, इसमें समझ में नहीं आया। आपने यानी कि उतनी, हाँ भेजिएगा, देखते हैं कितना भेजते हैं आप। I'll send it today, sir. Why today? After class. Because I have another class अच्छा after. अच्छा, हाँ ठीक है, आप भेजिएगा आराम से, है ना। चलिए, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनॉल, फाइन। तो यहाँ पे ना एक जो बहुत रश में मिस्टेक जनरली बच्चे कर देते हैं, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ब्रोमाइड दैट इज बेसिकली आर गोइंग लाइक दिस ना, RX2ROH, है ना, अल्काइल हाइड से अल्कोहल्स। तो जनरली व्हाट दे डू ना, वी विल ऐड, सपोज वो बोल देते हैं aqueous NaOH. If you add aqueous NaOH, there will be a problem that you will get something like this. Now this is not propanol, this is actually ethanol. Whenever you need to increase the number of carbon atom for alcohol, ध्यान रखिएगा, whenever you need to increase the number of carbon atoms, na ethyl 2 carbons, prop 3 carbon atoms. In that case, we are going to use one of the method is using via Grignard reagent. तो अगर Grignard reagent के साथ जाए, we will start with like this, ठीक है, and we need to make what, ऐसे बनाइएगा, उसके बाद 3 carbon atoms and OH, है ना, हम लोग को ये बना। So what we are going to do in this case, हाँ, इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये आसान है काफी। First of all, you will add Grignard, you will make Grignard reagent by adding Mg, then you will get 2 carbon atoms, MgBr, ठीक है। Now we have the Grignard reagent, एक second, I was not working sometimes. अब बताइए, दिस इज व्हाट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कौन सा, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आमना बताएंगे, आमना दिस अल्कोहल इज व्हाट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी? आमना, दिस अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी? Secondary. नहीं, आपको अंदाजा नहीं है अभी, यू नीड टू बी, दिस इज प्राइमरी, ठीक है ना, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, आई विल सेंड यू समथिंग, ठीक है, फाइन Okay, sir. जी। लेकिन ये ठीक करना है आपको, वाइल
आई थिंक यू आर मोर कंफर्टेबल विद दिस फैक्टर ना, ऐसा? इससे ज्यादा कंफर्टेबल है आप? Yes, sir. लेकिन नहीं, कितना टाइम लग रहा है देख रहे हैं आप इसको लिखने में, जी. और इसको देखिए कितना कम टाइम लगा, ठीक है ना? सो वी हैव टू सेव टाइम ना, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आप लोग को पता होना चाहिए कैसे करना चाहिए। नाउ अब बहुत आसान हो गया है, ठीक है? आई नीड द आंसर गाइस। इन ऑर्डर टू मेक प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हाट शुड बी यूज? 1 2 3 कौन सा कैटेगरी? प्राइमरी अल्कोहल कहाँ बनता है? 1 2 3 1, एंड व्हाट डू वी यूज इन 1? हाँ, फर्स्ट स्टेप में अब देखिए उल्टा चल रहा है। हियर यू विल ऐड फॉर्मल्डिहाइड HCHO, सेकंड स्टेप में वाटर। बात तो एक ही है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड पहले जाना चाहिए, उसके बाद वाटर। चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इधर ले लिया उधर, बात एक ही। मेक सेंस? ऐसा नोटिस नहीं चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आ रहा ना आप लोगों को समझ में? Sir, नहीं आ रहा so समझ it में? doesn't have to be a reagent. व्हाट? वेट अ सेकंड, वेट। मुझे कैन यू थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे सवाल को प्लीज? The Grignard reagent doesn't need to be. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है क्या? है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? Okay, sir. जायना, आपको तो सबसे ज्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना जायना? Um, हाँ, uh, so I'm not perfect with this either because preparation मैंने उतना नहीं पढ़ा था. We just had nomenclature. अल्कोहल हो चुका है आपके स्कूल में? Sir? अल्कोहल इज डन इन योर स्कूल? अल्कोहल फिनॉल ईथर्स? Halo adians and halo alkanes are done. No, this is halal. ये तो halogen halorine is done in this particular batch. This is alcohol phenol ethers. All of those things ना, ये जो भी चीजें छूट रही हैं आपकी दर्द हो रही है, वो चिंता मत कीजिएगा आपको, ठीक है ना? हाफ ईयरली तक, like just have patience till half yearly. In half yearly I will complete everything, ठीक है? Right now you don't have the time. I have the time. I can teach you guys, but आपके पास generally time नहीं रहता है, ठीक है? That is why in half yearly I will be able to complete these things. Yes, sir. चलिए, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब एक देखिए दूसरी तरह का सवाल है, ठीक है? Just get the NCERT. And this is a good question. No, no. See this question. Show how are the following alcohols prepared by the reaction of suitable Grignard reagent on methanol. तो एक reagent आपका फिक्स हो चुका है, that is methanol, है ना? Methanol is fixed. You have to use a suitable Grignard reagent. You have to choose a Grignard reagent that will react with methanol and give you this product, ठीक है? And give you this product. सवाल लिखिए, नंबर 1 हम पहले करते हैं। Show how are the following alcohols. Show how are the following alcohols. Show how are the following alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent, a suitable Grignard reagent, a suitable Grignard reagent on methanol. On methanol. चलिए, आप लोगों ने सवाल लिख लिया होगा। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, whenever we do reaction with methanol ना, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिएगा। So for example I have HCHO, CHO को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं, डबल बॉन्ड हो एंड H, ठीक है? जनरल है ना, जनरल लिखा रहे हैं हम आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। नंबर 1,
number 2 H2O. ठीक है? So what do we get? We get R, CH2 and OH. Now, important factor is that this carbon atom is already there in methanol. I don't have to bring this carbon atom in the Grignard. The two hydrogens are already present in the methanol. I don't have to bring those two hydrogen as well. This oxygen atom, it is also present on the methanol. I don't have to bring that on the Grignard region. This hydrogen is coming from where? It is coming from the water. That is why hydrogen भी आपको ध्यान नहीं देना. What you need to identify, what is this R group? ठीक है, तो CH2H को छोड़ के आपके पास R group ध्यान देना क्या होगा. ठीक है, so what we need to focus on, if the reactant is methanol and we need to identify the Grignard reagent, then ignore the CH2OH and look at the part that is not CH2OH, है ना. CH2OH के अलावा देखिए क्या है. ठीक है, प्लीज सी. So I have CH3. अब ये retrosynthesis ना, this is what retrosynthesis. I have to make this product CH. Retro का मतलब backwards ना, वही. CH3 single bond CH2OH. हमने क्या बोला, आप इसको इग्नोर कर दो. ठीक है ना, इसको इग्नोर करो, हटाओ. This compound, this is retrosynthetic arrow for Zyna and Amna. IT का Amna भी उस टाइम नहीं थी. This means we can make this molecule using whatever I'm going to write here. क्या मैं लिखना है आपको बहुत आसान है. CH2H को हटाइए, MgBr लगाइए. CH3 as it is, CH as it is, CH3 as it is, and in this CH you will add Mg, Cl, MgBr जो भी लगा. बात समझ में आ रही है? ऐसा नो पीसल मी गाइस. आमना, ऋषिता, हर्षा. So you can replace बोलो. every synthetic CH2OH. So when you have been told that reaction is happening with methanol only, जब methanol के साथ reaction हो रहा है तब आपको CH2H हटा देना, and then मतलब CH2H के अलावा you are going to use MgBr, है ना. ठीक है, इसका ये मतलब I hope you understand that this is a starting material. That means if I have something like this CH3, CH, CH3, MgBr, and I have HCHO, ठीक है, then I will get this product. ये जो product आप लोग को बना है. Make sense? Amna, Rishita, Harsha, yes or no, please tell me guys. Yes. Yes, sir. ठीक है. Copy this down. वो सेकंड वाला कर लीजिए खुद से. CH2H हटाना है, MgBr लगाना है, बहुत आसान है. Now, I am not going to write these things in the notebook, but you should write these things in the notebook. Okay, remove CH2H, add MgBr, है ना. If the reactant is if the reactant is methanol. ठीक है, हम क्यों नहीं लिखते हैं मतलब, बिकॉज वैसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि ये हम ऐसे ट्रिक आपको चीजें बता रहे हैं. आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रिक्स. सिंपल लॉजिक्स होती हैं चीजों की, उसको ट्रिक हमको अच्छा नहीं लगता बोलना. बट आप लोग लिखिए अपने नोट्स में, है ना. Done everyone, yes or no, please tell me. Yes, sir. Anyone still writing? No one is writing. Let me see if I can find any reaction. अच्छा, एक तो हम ना एक और आप लोग एक एग्जांपल इसी कैटेगरी में लिखना है आपको. ठीक है, यू हैव बेंजल्डिहाइड. ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड में यू विल हैव CHO. ठीक है, प्लस लेट अस सपोज यू हैव CH3 MgBr, and second step में I will add water. ठीक है, तो what is going to happen? Benzaldehyde will be as it is, कुछ नहीं होगा उसको. The CHO will become what? It will become CH. यहाँ पे लिख जाएगा OH, and this carbon atom will be added with CH3. ठीक है, एक एग्जांपल इसको लिख लीजिए जरा. That means benzaldehyde can also show this type of reaction, है ना.
ठीक है, अदर वे कुड बी, देखो दूसरी चीज ये भी हो सकती है, यू कैन स्टार्ट विथ HCHO। HCHO HCHO, हाँ ठीक है, HCHO से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, HCHO प्लस यू कैन टेक अ Grignard reagent like this, benzene ring MgBr, second step में H2, ठीक है, so you will add everything as it is, जो benzene ring है वैसे ही रहेगा, ठीक है, and I hope you remember that this HCHO it gets converted to CH2OH। example 3 कर लीजिए, all of these things should be there in the notebook, वैसे मतलब बहुत ज्यादा इसका कुछ ये नहीं है, these are simple things, बस ये है कि आपको ये सीधा एग्जाम में देखने को ना मिले ना, इफ यू हैव सीन दिस वंस इन योर नोटबुक, वंस इन द क्लास, देन इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस टू डाइजेस्ट दिस इन द एग्जामिनेशन, बस यही, अदरवाइज कुछ खास यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब ये इतना बड़ा बड़ा बेंजीन रिंग लग गया है तो आपको हार्ड लग रहा होगा, तो उसके लिए क्या करना है, इसको आप पीएच लिख सकते हैं ना, यू कैन राइट दिस एज पीएच डबल बॉन्ड ओ पीएच प्लस पीएच MgBr। अब आसान हो गया, क्या करना है, पीएच डबल बॉन्ड ओ को OH कर देना है, एंड दिस पीएच विल बी हियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पीएच, मेक सेंस, yes or no, पीएच नहीं, अरे बोलो भाई, आमना रिश्तेदार हर्षा, ओके, छापो 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 छापो। The only purpose of these a bit complex type of reaction, complex तो नहीं कुछ भी है ना, वो अब देखिए बेंजीन रिंग था तो आप थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो कैसे बनाएंगे, ओ माय गॉड इतना बड़ा बड़ा पीएच आ गया, यू विल ट्रीट पीएच एज CH3 ओनली, छोटा दिखने लगा बस, है not very complex reactions, but still if you have seen these reactions you will be very much comfortable in the examination अगर कहीं ये सारी चीजें रही है ना, बाकी छोटों के लिए तो आप तैयार रहिएगा ही। मूविंग ऑन, I hope you have written this down. Now carbonyls are over, you write next the third method of preparation, यहाँ से Zyna you can start writing but you need to leave a few pages, how many pages should Zyna leave, कोई बताएगा Zyna को please, how many pages should Zyna leave, 5 pages, sir. कहाँ से लेके, from alcohols के starting ना, Oh, alcohols starting. आज ही 5 पेज पढ़ा दिया क्या हमने, हाँ My book is small. हाँ Zyna नहीं ठीक है, Zyna do you have a normal size notebook या फिर बहुत छोटा है आपका, It's normal, it's the long size. लॉन्ग, हाँ ठीक है, आई थिंक हर्षा यू राइट इन लॉन्ग ना, नहीं हर्षा भी शायद, हाँ रिकॉर्ड टाइप, No, sir, I didn't know. अच्छा ठीक है, नहीं बताया, दोनों send me photos, Rishita and Zaina, send me photos of your notebook, हम बताते हैं आपको कितने पेज पढ़ना, these things are important, तभी हम थोड़ा सा टाइम दे दे रहे हैं इन चीजों में। लाइफ इज फुल ऑफ स्मॉल डिस्कम्फर्ट, मतलब जाइना स्टार्ट करेंगे लिखना 5 लाइन के लिए छूट जाएगा, आई मीन 5 लाइंस शी वुड नॉट बी एबल टू मैनेज अगर उन्होंने कम, इफ शी लीव्स लेस नंबर ऑफ पेजेस, जाइना एंड ऋषिता है ना, हाँ तो ये दोनों का रेटिंग जाइना का आया है, ओके जाइना ठीक है, थोड़ा सा आपका लॉन्ग पेज में है, अच्छा यू आर राइटिंग दीज थिंग्स, आपको वैसे फिर से लिखना पड़ेगी चीजें, पेजेस आपने अगर नहीं छोड़ा है तो, ऋषिता Sir, have the recordings of these lectures been uploaded on YouTube? I think yesterday's lecture will be uploaded today, ठीक है, but you can get from the previous year, ना? Most of the content is almost similar, थोड़ा सा examples कभी कभी इधर ऊपर नीचे हो जाता, कुछ याद आ जाता तो हम बता देते हैं, otherwise more or less it is similar. By the way, how many pages, Rajita, total alcohols? 11 pages, sir. Total 11 pages. By the way, handwriting दोनों का almost like similar है,
आप लोग दोनों ही सेम साइज ही लिखते हैं, बहुत ज्यादा छोटा बड़ा नहीं है आप लोग। ठीक है, सो जाइना इज जाइना, ये आप एग्जाम्पल में 3 आपने थोड़ा सही से नहीं लिखा है, ठीक है ना, उसको लिखना हम बता देते हैं। टोटल हाउ मेनी पेजेस यू शुड रीच द 15 10 क्या बोला था आपने? 11. 11 pages. So I think Zaina, you should leave 8 pages. 8 pages छोड़ के लिखिए आप, Yes, sir. ठीक है। ये देखो Zaina, I am not saying, ध्यान दीजिएगा Zaina, ठीक है। Yes, sir. This should be not here. I have represented ये जो है ना, ये जो these benzene as pH, ये सेम चीजें हैं। आप यहाँ पे प्रोडक्ट में मत लिखिए उसको, मेक सेंस। यहाँ पे Oh, प्रोडक्ट yes, में आपको sir. क्या लिखना चाहिए? हाँ, प्रोडक्ट में ये लिखना होगा आपको, बेंजीन। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा स्पेस देखिए, बेंजीन, इधर भी बेंजीन, यहाँ पे OH, ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट, बट आसानी है, पीएच करती है। राइट द हेडिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यू विल राइट स्टेटमेंट विथ मी, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, when carboxylic acid is reduced using lithium aluminium hydride, only, nothing else, और कुछ नहीं, ठीक है। using lithium aluminum hydride it converts to 1 degree alcohol, 1 degree alcohol with same number of carbon atom, with same number of carbon atoms, carbon atoms। बेसिक रिएक्शन क्या है देखिए, RCOOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पे देखिएगा बच्चे क्या करें, ROH, ROH इज रॉन्ग, हियर यू हैव R plus 1 कार्बन एटम ना, ठीक है। तो दिस COOH इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है ना, यू विल हैव R as it is, R को कुछ नहीं होगा, the change will be here, carboxylic acid, what it will be getting converted to CH2OH, make sense? Yes or no, please tell me guys, I hope you understand। ROH will be wrong, उसी तरह से देखिए जब हम करते हैं ना 1 2 3 कार्बन एटम्स एंड COH and I write here LiLH4, बच्चे ऐसे करके छोड़ देते हैं, सही है या गलत है बताइए गाइस। आमना, ऋषिता, वर्षा एंड जाइना, इज दिस राइट और रॉन्ग? ये बताइए ना, ये तो फर्स्ट वाला रॉन्ग या राइट? जी, आमना को क्या लग रहा है? आमना टेल मी। Sir, wrong. आमना, why it is wrong? Tell me what's wrong here? Carbon atom. Yeah, number of carbon atoms ना, here we have 3 carbon atoms, so I first of all make 3 carbon atoms as it is, and जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स आप लोग को देंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, बहुत आसान है ये वाला, है ना। इसमें आई डोंट थिंक आई नीड टू डू मच एक्सप्लेनेशंस हियर। 5 कार्बन है, ठीक है, 6 मत कर दीजिएगा इसको ऋषिता। Yes, sir. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जाइना आपसे ही हो जाएगा ना, ये सुनो, आसान है, Yes, sir. ठीक है। COOH, सिर्फ COH पे ध्यान देना है आपको, आइदर यू कैन डायरेक्टली उस कार्बन से OH खींच के निकाल दीजिए एक बॉन्ड, और COOH को यू विल कन्वर्ट टू CH2OH, है ना, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू गाइस, बट आई होप यू ड्रॉ दी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड लाइन के लिए आप लोग को, आई थिंक आमना एंड जाइना विल नीड सम प्रैक्टिस। हम प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, हम क्यों प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, ये थोड़ा सा आई थिंक जाइना को शायद नहीं याद होगा, मतलब नहीं पता होगा, बिकॉज आई हैव नॉट डन दिस। लेट अस सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, डबल बॉन्ड O,
एंड CH, ठीक है। तो इसका हम आप लोग को बना दे रहे हैं। इफ आई एम यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन दिस विल बी OH, और दिस कार्बन एटम विल बी CH2OH, है ना, CH2OH। तो कुछ सुनी आपको लिखेंगे। तो बिना अपडेट करने सेकंड और थर्ड के लिए आंसर्स भेजिएगा आप लोग ऑन माई व्हाट्सएप। Sir, only carboxylic group will change it. हाँ, और कहीं पे चेंज नहीं आएगा। Sir, R will only not change. fourth one. ये हम लोगों ने ये तो पढ़ा है ना, कीटोन व्हेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है तो वो चेंज हो जाता है। Okay. यस्टरडे वी लर्न दिस ना, याद है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों की केसेस ये सुनो। Yes. फर्स्ट तो हमने बनाया था, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। हाँ, थर्ड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट। If you guys are not very comfortable with bond line structure, na, then I'm sending you something. Bond line. कौन है? हर्षा, हर्षा का आई थिंक ठीक है, बट एंड Rishita and Zainab. I've sent, since I don't have your number, Amna. I think I have it, but I don't have your number. I think Amna, that का number शायद Yes, my dad's number. कुछ तो मैसेज किया था आपके डैड ने, I think I saved his number, ठीक है। So you can practice you can read the theory of bond line structure also, okay? And you can practice from there the bond line structure when carboxylic acid is reduced. Second one is fine, third one is fine, fourth one is also fine. Yeah, yes, Karsha, everything is correct. Zaina, waiting for your answer. So the second and third would be bond line structures. नहीं, मतलब bond line structure आपको जैसे लिखना लिखे, ठीक है, doesn't matter. Such that bond line structure they save time and you should be comfortable in that, ठीक है, that is a requirement from my side and you have to do that, but not right now. I will give you time ना, कुछ आप हर्षा एंड ऋषिता ये 11th क्लास से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस वजह से इनका थोड़ा सा फास्ट है। आप लोग को हम कम से कम 1-2 हफ्ता तो दे सकते हैं, ठीक है। आई कैन गिव यू गाइस 1 or 2 weeks if you don't understand हिंदी, हम भूल जाते हैं किसको हिंदी आती है किसको नहीं। गॉट इट जाइना? Yes, sir. So we have ठीक to है, separate the alcohol. अल्कोहल सेपरेट नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या बोलना चाह रहे हैं आप? I mean, you don't know how to make the product? yeah, I'm not sure. Not sure, ठीक है। Can you identify the R groups in the second structure? What is the R group apart from COH? Whatever is there, that is R. Yes or no? Yes, sir. So can you make that at least? Because nothing is happening to the R, na? You can see that, है ना? Makes sense. Yes, sir. Now what is happening to COH? It is getting converted to? बोलो, it is getting converted to? Correct. उतना कर सकते हैं, like R group, then make a bond
देन CH2H जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, कर सकते हैं इतना? Yes, sir. कर लिया आपने? So, डन? नॉट डन? mm, Make everything as it is apart from COOH K. Like apart from COH, make everything as it is. Did you make that, Zaina? so in the bond line structure for the second one, there would be 5 नहीं carbon नहीं atoms. नहीं, वो मत कीजिए. You draw it, whatever you feel like, ना. Draw it and send it to. Okay. 1 minute. Do that. Rishita and Harsha, in your school, they do not give you these type of questions. They always write CH3, CH2, CH2, CH2. ऐसे करके लिखते हैं. Yes. No, sir. They give this kind of questions. What about Harsha? No, sir, they don't. Amna, what about your school? Sir, actually, we just started with the introduction of the chapter. 11th में भी थी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं थी? अच्छा वो sorry ये हाँ, like CH3 CH2 like that. वो वही CH3. But we need to do this, ठीक है ना? I mean, maybe you will get to know that bond line structure is not really needed. That if you want to be in my class, you have to know bond line structure completely. Okay. ठीक है? I will just ask my father na to send me a message, or you send me a message after the class. I will send you a PDF. From there you can practice. Okay, sir. अच्छा, ये जो हमें भेजा है, ये आप लोगों ने किया था क्या, हर्षा एंड रशिता, इन 11th स्टैंडर्ड? No, sir. नहीं. हर्षा, व्हाट अबाउट, रशिता, व्हाट अबाउट यू? No, sir. ठीक है, एक सेकंड. जायना, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. आई टोल्ड यू टू मेक एवरीथिंग एज इट इज ना. डबल बॉन्ड वो कहां से आ गया उसमें? देखिए, सी आई एम सेइंग अ लाइन, यू रिपीट दैट. ओके फाइन जायना, ठीक है? मेक एवरीथिंग एज इट इज अपार्ट फ्रॉम COOH. बोलिए एक बार. Draw everything. मेक as it is apart from COH. ठीक है? And then we are trying to just follow that statement. I will make everything as it is apart from COOH. Okay? Fine, Zaina? ठीक है? So if I follow that statement, I will make everything as it is. I made everything as it is apart from COH, na? Make sense? Yes, sir. Then COOH will change to CH2OH. इसको बोलिए दोबारा. COOH. COOH. Why? Will change to I mean, see, CH2OH. that also makes sense. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. So जहां COH था वहां पे क्या लिख देना, बताइए? What should I write here? Here we had COH. Now what should I write here? Does that make sense now? Okay. Yes, sir. ठीक है, सिंपल है ना? Okay. थर्ड वाला फिर से कर लीजिएगा एंड सेंड मी. मेक सेंस? I thought we had to isolate the alpha. नहीं नहीं नहीं, आइसोलेट सिंपल है ना, आसान. ठीक है ना? Okay. ठीक है, डोंट वरी. I hope you can just follow along these lines and that you will remember, like when you are using carboxylic acid, then what we need to do, we need to draw everything as it is apart from COH, and then what we need to do is COH will get converted to CH2. The thing is, if you were here in the last lecture, then it would have been better. You can
Yes, very good. That is correct. ठीक है? Yes, Make sense? Yes or no? ठीक है. याद रहेगा ना? ठीक. चलिए, I have to guys watch will. the previous lecture. हाँ, वो तो लेकिन देखना पड़ेगा आपको. Write a note. ठीक है? In the notes you will write first of all NaBH4, ठीक है? And H2 in the presence of nickel or palladium or platinum. Do not convert. Do not होगा, does not होगा. What will happen? Plural में क्या होता है? Do not, does not. Do not. Do not. Do not convert carboxylic acid to CH2OH. ठीक है? Rishita, Amna, and Harsha, you may be remembering that sodium borohydride and H2 nickel PD or PT, these are also reducing agent that we covered in the last lecture, which used to convert aldehyde and ketones to alcohol, but they will not be able to convert the carboxylic acid. ठीक है? They will not be able to convert carboxylic acid. And इसके लिए क्या करेंगे ना, देखिए बहुत बढ़िया सा एग्जांपल हम यहाँ पे कवर करेंगे. See, here I will write CHO. Zana, you just need to follow along here, Anna. This is actually from the last class. And here I write carboxylic acid. I have aldehyde CHO, ketone, and carboxylic acid. And if I am going to use NaBH4, then in this case, the aldehyde and ketones will be converted to the respective alcohol. So ketone converts to OH directly, and CHO it gets converted to CH2OH, so CH2OH. But the carboxylic acid will be as it is. Okay? So carboxylic acid is not affected by sodium borohydride. Okay? Moving on. Next point you will write, since lithium aluminium hydride is expensive, carboxylic acid, I am writing carboxylic acid like this, RCOH, is converted to ester, and on further catalytic hydrogenation, it gives alcohol. It gives alcohol. So basically क्या होता है? First of all, we will have RCOOH. बताइए ईस्टर में कैसे कन्वर्ट होगा? हर्षा, रिश्ता, कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताइए किससे रिएक्ट करते हैं? जी किससे रिएक्ट कराया जाता है? कल पढ़ाया था आप लोग को जेई में. ऋषिता एंड हर्षा, कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? How do we convert? In the presence of H2SO4. नहीं, गलत. इन द प्रेजेंस एक और रिएजेंट होता है, साथ में H2SO4 होता है. पलटो भाई, नोट्स तो पलट लो कम से कम. You can flip some pages. Carboxylic acid plus what will give you ester? हाय हाय, कल की चीजें नहीं याद है. NH4OH? नहीं, NH4OH कुछ नहीं. अल्कोहल याद आया? इसी पे तो डिस्कशन हुआ था. If carboxylic, if as there is an organic compound and then you add alcohol, it gives you fruity smell. Then the organic compound is carboxylic acid. If there is an organic compound, you add carboxylic acid and it gives fruity smell. That means the organic compound is alcohol. क्या ही हम बताएं आज. ना अफसोस हो रहा, नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को फिर इतना ज्यादा. आप लोग को हम इतना नहीं पढ़ाएंगे, याद ही नहीं रख रहे आप लोग. Here you will do. अच्छा, by the way, let me just expand on this. Okay, so that you can see where the carbon double bond O is there. C double bond O, this will be coming from the carboxylic acid. So this R1 is, please remember that R. Here you will have R OR dash, that is ester, and then H2 in the presence of nickel PD or PT. Nickel हम ले ले रहे हैं यहाँ पे. What will happen?
this will break and you will get R. जो ये C double bond O है ना, that will be getting converted to CH2O. ठीक है? So you are going to get what? Alcohol from the carboxylic acid. Number of carbon atom is still the same. ठीक है? Next you will write lithium aluminium hydride can also convert esters to 1 degree alcohol. Okay, but we generally don't use we don't use lithium aluminium hydride if we want to convert esters because we have a cheaper method, that is hydrogenation in the presence of nickel Pd or Pt. But you should know that because there may be some reaction that they can ask R that is bonded with carbon double bond O that is bonded with OR dash. This is our ester. You react this with lithium aluminium hydride LiAlH4. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, you will break this bond. ठीक है, this C double bond O, this R, this will get converted to CH2OH, CH2OH plus this R dash, it will also get converted to alcohol. Right, next point. NaBH4 can't convert esters to alcohol. NaBH4 की बस के बाद. Copy this down. I will give you one question. We just have 2 more method of preparation. आज नहीं करेंगे, लेकिन कल ही करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Then everyone, you know peacefully. तो साथ साथ लिखते हैं ना. Anyone still writing? Anyone still writing? No. ठीक है, ध्यान दीजिए. There's suppose you have something like this. You have benzene ring. यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, ठीक है? Here you have some R groups and something. And here you have one more double bond O. And here you have OCH3. ठीक है, और कुछ करना है तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे CH डाल लेते हैं. एंड थोड़ा ज्यादा अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी डाल सकते हैं, COOH. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड. If I react this with NaBH4 ना, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट से इसको रिएक्ट करें, then what will be the product? कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना, आसान है सारी चीजें, कुछ नहीं, बस मॉलिक्यूल बड़ा है. But we don't have to deal with the molecule, we have to deal with the reactive parts. Now we saw sodium borohydrate, and I know that sodium borohydrate can convert ketone to alcohol, है ना, and it can convert aldehyde to alcohol. Aldehyde को convert कर सकता है. Esters पे इसका काम नहीं चलता है, and same with carboxylic acid पे इसका काम नहीं चलता है. So carboxylic acid will be as it is, ester will be as it is. Ketones and aldehyde, they will be converted to respective alcohols. This benzene ring will be as it is, benzene में तो कुछ नहीं होगा. Here we had ketone will be converted to OH like this, CH2 double bond O, and OCH3 will be as it is because it is an ester. This CHO, that is aldehyde, this will be converted to CH2OH, and this carboxylic acid will be as it is because carboxylic acid पे NaBH4 का कुछ नहीं. ठीक है, copy this down. Now, just for the, for knowing a bit of
organic chemistry semantics, since NaBH4, it is selectively reducing aldehyde and ketone. Right? It is selective. This way, say NaBH4, we call it selective reagent or selective reducing reagent. It does not reduce each and everything, it reduces some things only. So, but when we have lithium aluminium hydride, now lithium aluminium hydride has the ability to reduce everything. अच्छा जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में चीनी पे हम आपको करके दिखा देते हैं lithium aluminium hydride से इसी चीज का ठीक है. If I have used lithium aluminium hydride and then AlH4, then the major product will be this benzene ring will be as it is, तो कुछ नहीं होगा. This will be getting converted to OH because reducing agent lithium aluminium hydride है. तो ये सब को reduce करेगा. Then you will have this carbon atom. This will also getting converted to CH2OH. ठीक है. The aldehyde it will be also getting converted to CH2OH. This carboxylic acid it will be also getting converted to what? This one carbon atom CH2OH. CH2OH. ठीक है. Now, if you talk about this OCS3, तो OCS3 से एक अलग alcohol मिल जाएगा CH3OH, but generally इसको आप ignore कर सकते हैं because this will be in very minor amount में तो नहीं होगा. It will be in same amount as this bigger molecule, but this is not very useful. जब अगर हमको CH3OH ही बनाना रहता तो I would have taken something small rather than the large molecule. चलिए. Make sense? Yes or no? Tell me. Lithium aluminum hydride and sodium borohydride. अच्छा एक और कर देते हैं. ठीक है एक और कर देते हैं. एक और H2 in the presence of nickel PD or PD है ना. H2 in the presence of nickel. So H2 क्या किसको करता है? H2 can reduce the aldehyde, it can reduce the ketone and it can also reduce the ester, but it cannot reduce the carboxylic acid. So ये थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता है. Khadija, we are going to start in a few minutes, okay? Fine, Khadija. Yes, sir. Here. This benzene ring will be as it is. ठीक है. Aldehyde, sorry, ketone will be converted to OH. The ester will also get converted to this carbon atom तक छोड़ दीजिए, उसके बाद OH है ना. Then the aldehyde will be getting converted to CH2OH. This carboxylic acid will be as it is because this cannot convert the carboxylic acid to alcohol. ठीक है. हो गया अब तो. So I didn't understand. What you did not understand, Zaina? After the aldehyde group gets converted and we get CH2OH, then is this See, like you did not attend the previous class, no? So that is why you don't know that ketone and aldehyde get converted to alcohols, right? उसी में दिक्कत हो रही है ना आपको. तो हाँ, तो you watch the lectures and then maybe आप हमको ना कभी भी क्लास में याद दिलाइएगा. Then I will explain this once again. ठीक है, but you need to watch that lectures. Okay? Yes, sir. Sir, can you repeat how LiAH4 will react with the ester part? I think ये तो ना. You written this point? देखिए जरा. Yes, sir. So till the carbonyl carbon will be there, है ना. देखिए R, this carbon atom is there. This carbonyl carbonate is getting converted to CH2OH. Then the OR, the alkoxy, I can say, alkoxy group, it is getting converted to another alcohol, R-H2. So if I identify here, this is my alkoxy part, which is getting converted to this alcohol. और यहाँ तक आपके पास कार्बन था. That means after benzene, if I count 1, 2, 3 carbon atom. So 1, 2, 3 carbon atoms. उसके बाद we will have alcohol. ठीक है. Third carbon atom is having carbonyl carbon. That carbonyl is getting converted to alcohol. Make sense? CH3OH won't be formed with H2 and nickel. It will be formed, but generally इसको ignore किया जा सकता है. मतलब हमने यहाँ पे बस ऐसे करना. हाँ, H2 निकल में फॉर्म होगा, वहाँ पे फॉर्म होगा. But generally you don't need to make that. Major product is going to be this one, है ना. I think उसका logic भी हमने बताया that if you do, we don't write this. Why don't we write this? Because just imagine we have to make, let's suppose, the reason why we are doing this reaction
was to make CH3OH. अगर ये बनाना होता, if I had to make this particular molecule, then I would have started with something different. I would not have taken this large molecule. If I have taken this large molecule, then our aim would be to make this large molecule rather than CH3OH. That is going to be the byproduct. Make sense, Harsha? But why Yes. can we ignore this? Okay. Can you guys see the the assessment in the Learnivio app? Apart from Khadija, Amna, Rishita, Harsha, and Zaina. So by the way, आप लोग जब तक ऐप में देखिए टेस्ट एक्टिवेटेड है या नहीं, खदीजा, do you have doubts या what are we going to do in today's class? I don't have doubts. Ajay, you don't have doubts. Okay. Yeah. So I will teach you Halloween, Halloween. Yeah. Like recap. But that we need to practice. I'm listening to organic. Sorry, what, Rishita? The test is not It's not there. there. Oh, sorry. They March, May 12 होना चाहिए ना? Okay, page was not good. Wait a second, guys. Will be activated. From carbon. Sesame transfer.